Hello, wonderful brains. Welcome back to your English class with your learning buddy Aprajita. And here we start with the English textbook, Language Odyssey, Class 8 by Acknowledge Series, Amit Publishing House. So, children, let's start with chapter number 13 today. And the chapter is Waste Technology. What is this waste technology? क्या है ये waste क्या है और waste technology क्या है? इसके बारे में आज हम इस chapter में पढ़ेंगे and here we go with our chapter. Let's read about the story first. What's there in this chapter? The lesson is about recycling waste technology. Recycling, recycle करना, कोई चीज recycle करना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को दोबारा से यूज में लाना. Okay, that is known as recycling. Fine. In this lesson, we'll get to know about how the recycling of waste is done without harming the environment and how come recycling is the best alternative among all in order to save our environment from degradation. Waste materials जितना भी कूड़ा होता है, जो बेकार चीजें होती हैं, उनको फिर से रिसाइकल करके दोबारा से यूज में लाना. दैट इज द रिसाइकलिंग वेस्ट टेक्नोलॉजी. एंड इसके थ्रू हम कैसे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होने से बचा सकते हैं, दैट वी रीड हियर इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. रेडी? ओके. Recycling waste not only helps save money but also helps the environment. Recycling means converting waste to reusable material. Means आपको भी बताया मैंने, waste materials को दोबारा से काम में लाने के लिए जो process होता है, that is known as recycling. We lessen the pollution that is created by burning rubbish and save valuable resources. If we burn the waste materials, like waste materials को जो कूड़ा होता है उसको अगर हम burn करते हैं, तो what happens children? The smoke is there. जो जितना भी वो smoke जो create होता है वो सारा environment में जाता है और pollution होता है, air pollution is there. उससे बचने के लिए और अपने valuable resources को बचाने के लिए this recycling is done. Many countries encourage recycling and new technology allows more waste to be reused. अब बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है, ये रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है, एंड more waste materials are reused. Most of the rubbish that can be reused are paper, metals, glass and even plastic. जो चीजें मेनली रीयूज हो सकती हैं वो है पेपर, देन मेटल, ग्लास और इवन प्लास्टिक्स भी रीयूज हो सकते हैं. Half the world's waste consists of paper. सबसे ज़्यादा waste जो होता है वो paper का होता है. Many countries import waste papers rather than new pulp for their paper mills. बहुत सारी countries अपने paper mills के लिए जहाँ paper बनते हैं उसके लिए क्या करती हैं, जो waste है उसको import करती हैं, बाहर की दूसरी countries से खरीदते हैं, लेते हैं. The waste is pulped, cleaned and bleached to remove most of the ink and dirt before it is turned into new paper in the same way as wood pulp or rags. जैसे wood pulp और rags का प्रोसेस होता है, वैसे ही जो वेस्ट है, पेपर वेस्ट जो है उसको पहले पल्प किया जाता है, उसका गूदा बनाया जाता है. ओके, एंड आफ्टर दैट इट इज क्लीन. क्लीन करने के बाद उसको ब्लीच किया जाता है कि उसमें से ज़्यादा डर्ट और इंक जो है उसमें पहले से लगा हुआ इंक जो है वो हट जाए. Now, metals are recycled into new steel and other metals. A new car today consists of parts of earlier cars that have been scrapped and turned into steel sheets. अब जो न्यू कार्स हम खरीदते हैं, जो न्यू कार्स होती हैं उसमें ज्यादातर जो पोर्शन होता है वो पुरानी कार्स का होता है. कैसे? जो पुरानी कार्स हैं उनका जो स्क्रैप होता है उसको स्टील शीट्स में बदल दिया जाता है, रीयूज करके.
recycling. Aluminium is worth recycling because extracting it from bauxite consumes a huge amount of electricity. Now, aluminium जो है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है रिसाइकिल करने के लिए, क्योंकि जो एल्यूमिनियम अगर हम बॉक्साइट में से निकालते हैं, जो एल्यूमिनियम निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है. Since most aluminium today is recycled, the energy used to make aluminium had fallen by a quarter since the early 1970s. Aluminium का recycling सबसे ज़्यादा होता है, जिस कारण कि क्या हुआ है, जो एल्यूमिनियम बनाने का जो कॉस्ट है वो गिर गया है. बिकॉज पहले डायरेक्ट बॉक्साइट से अगर बनाते थे तो उसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाता था, बिकॉज इट यूज टू टेक so much of electricity. It used to consume so much of electricity. But now recycled aluminium is used and this cost has fallen down since early 1970s. Glass is also worth recycling. The most sensible method is to use glass bottles as often as possible. Broken glass, known as cullet, can also be recycled. ग्लास को भी रिसाइकिल, इट्स अ सेंसिबल, द मोस्ट सेंसिबल मेथड जो है ग्लास को रिसाइकिल करने का वो है ग्लास बॉटल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज. Many Western countries have bottle banks into which used bottles can be thrown. Bottle banks depend on people's goodwill. Now, बहुत सारी कंट्रीज में बॉटल बैंक्स बने हुए हैं जहाँ की बॉटल्स यूज करके वहीं पे थ्रो कर दिया जाता है, एंड देन दोज bottles are recycled. Cullets of mixed colors can be used only to make green glass. अब देखिए cullets, अभी आपको अपने यहाँ पे पढ़ा ना कि cullets क्या होता है. broken glass known as cullets. जो broken glass होता है उसको कहते हैं cullets. तो ये जो cullets हैं, अब जो bottles होती हैं वो अलग अलग colors की भी होती हैं. There are transparent bottles also and there are colorful bottles also. तो जो कलर के मिक्स कलर्स के जो कलर्स होते हैं उससे केवल ग्रीन ग्लास बनता है, फाइन, उससे ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं बनता. ब्रोकन ग्लास कैन बी रीमेल्टेड इन फर्नेस, बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं उसमें रीमेल्ट किया जाता है ब्रोकन ग्लास को, एंड देन इट कैन इजीली बी शेप्ड इनटू न्यू बॉटल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. फाइन. Plastic is one of the most difficult substance to recycle because it comes into many varieties. प्लास्टिक जो है सबसे मुश्किल चीज है रिसाइकिल करने की, क्योंकि वो अलग अलग तरह की वैरायटीज होती है इसकी. प्लास्टिक की देयर आर डिफरेंट n number of varieties. Some plastic bottles, for example, consist of 6 layers of different types of plastics. Now see, कुछ प्लास्टिक बॉटल्स ऐसे होते हैं जिसमें 6 लेयर्स अलग अलग तरह के प्लास्टिक के होते हैं. Each designed to give the bottle certain qualities, shape, strength and flexibility. And as yet there is no easy way to change an old plastic bottle into new one. Old plastic bottle को new one में change करने का कोई easy तरीका नहीं है. Fine. Unfortunately, plastic scrap can only be turned into a low quality product. Example, plastic might be cleaned only to be cut into very tiny pieces and used to stuff seat cushions. Durable fencing can be made when a mixture plastic waste is recycled into plastic timber. So plastic is the most difficult thing to be recycled. प्लास्टिक रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल काम होता है, एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस कि इस प्लास्टिक को, प्लास्टिक स्क्रैप जो होता है, जो वेस्ट प्लास्टिक होता है, उसको लो क्वालिटी प्रोडक्ट में चेंज किया जा सकता है, तो कोई फ्रेश प्रोडक्ट नहीं बन सकता उससे, और टाइनी टाइनी पीसेस में कट करके दे आर यूज्ड इन सीट कुशन्स. सीट के कुशन्स जो होते हैं, सीट कुशन्स होते हैं, उसमें यूज किया जाता है. फिर फेंसिंग के काम भी आता है, ड्यूरेबल फेंसिंग. Okay, so this was about the recycling of waste products. Fine children, recycling waste technology. This is the technology through which the waste is recycled. Now, in a nutshell, what we have read in this chapter,
Recycling the waste. How waste is recycled. Reducing the waste. And how to reduce the waste. जो वेस्ट जो कूड़ा हमारा चारों तरफ फैला पड़ा रहता है उसको रिसाइकिल करके हम उसका वेस्ट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. Fine children. Now our testing time here. Tick the correct answer. Rubbish that can be recycled is paper, glass, both A and B, and fruit peels. इनमें से कौन सा rubbish that can be recycled? Proper recycling किसकी होती है? पेपर की भी होती है, ग्लास की भी होती है. Okay? So both A and B. Fine. Plastic is one of the most dash substance to recycle. Easiest, interesting, difficult, or funny. Plastic is one of the most difficult substance to recycle. Plastic scrap can be changed into a dash quality product. High, lower, prominent, or superior. It can be converted into a lower quality product. When the waste is cleaned, dash are removed too. Gold and silver, ink and dirt, metal and glass, pencil and eraser. यहाँ किसकी बात हो रही है? पेपर वेस्ट की. तो पेपर वेस्ट को जब क्लीन किया जाता है तो उसमें से क्या हटता है? इंक एंड डर्ट हटता है. फाइन. नाउ चिल्ड्रन, fill in the blanks. Dash are dash into new steel and other metals. What is converted into new steel? Metals. Metals are recycled. Metals are recycled into new steel and other metals. Glass is also worth what? Recycling. Glass is also worth recycling. Dash of mixed colors can be used only to make green glass. Palettes of mixed colors. And next is bottle banks depend on dash goodwill. किसकी goodwill पे depend करती हैं? People's goodwill. O-P-L-E-S. People's goodwill. Mixture plastic waste is recycled into plastic. What? Mixture जो plastic waste mixture होता है वो किसमें recycle किया जाता है? Recycled into plastic timber. Plastic timber. Fine. What's next? Write T for true and F for false statements. Recycling waste helps the environment. Does it do? Recycling, when waste is recycled, does it help the environment? Yes, this is true. Many countries encourage recycling. Yes, this is also true. Half the world's waste consists of plastic. Is it so? Half the world's waste consists of plastic? No. Half the world's waste consists of paper. So this is false. Metals are recycled into new steel and other metals. Yes, this is true. Aluminium is not worth recycling. This is false. Aluminium is worth recycling. Broken glass is known as cullet. Yes, this is true. Now what's next? Answer the following questions. How does recycling help us? Recycling helps us to reduce the waste and to make the environment clean. Make it clean from the pollution. The pollution doesn't occur if the waste materials are burned like that only, then the smoke causes the air pollution. So to stop that, the waste should be recycled so that the pollution is not there. In this way, the recycling helps us keep the environment clean. Okay, children. Now the next question is, in what ways do many countries encourage recycling?
many countries encourage recycling by recycling more and more waste, and they import the waste papers. They import the papers from other countries rather than using the rugs and rather than using the rugs to make the new paper. They import the waste papers from other countries. So now name some of the rubbish that can be used. The rubbish which can be used are the waste of glass, metals, paper, and even the plastic. How can paper be recycled? The paper can be recycled. First, it is pulped and then cleaned and bleached so that the most of the dirt and the ink is cleaned away, and after that it is formed into a pulp and made a new paper. How can glass be recycled? How can glass be recycled? The glass can be recycled by putting in a very big furnace, and after that it is melted and then the new bottles are being formed. Why is plastic one of the most difficult substance to recycle? Plastic is the most difficult substance because many of the plastic bottles, they are formed in different layers, in different types of layers, in 6 layers. So every type of the layer is of a different material. So it is very difficult to recycle the plastic. How can broken glass be recycled? The broken glass known as cullet can be put into a furnace. It can be put into a furnace and can be melted and made. The new bottles can be formed. How can plastic scrap be used? So as plastic is the most difficult thing to recycle, the plastic scrap is broken into tiny pieces and it is used in seat covers and seat cushion covers, and they are also used for fencing, after making the plastic timber. Okay, so this was all in this chapter, children. I hope you have understood very well that why recycling is so important and why we should recycle the things rather than leaving them as the waste, because अगर वेस्ट पड़ा रहेगा, वेस्ट मटीरियल ऐसे ही पड़े रहेंगे तो वो harm करेंगे हमारे environment. They will harm our environment. If we burn those waste, then it will cause the pollution. The air pollution will be there. So it is the best method, the best thing to make our environment clean and to use that waste material also to finish that waste is to recycle those wastes. Okay, so stay clamped, stay excited for the clamp of the other video which is soon to come. So children, till then, keep learning, be happy. Bye.